there is one quote that stuck with me. It says, "You are the way for the universe to know each other." Assalamu alaikum. So my name is Usman Mahmood, and I have been part of Contour success story from 2016. So initially, I started as an advisory software engineer in Jonas Construction. It was a very great team. Afterwards, Contour gave me an opportunity to lead a team in A+W. And that was also a great chapter of my life. So now I'm serving in Charter Software and helping Contour. One of the good things about Contour is its culture. So it's not just the people you work with, also about the people that you share your desk with. कहीं आप जाएँ, मेरे ख्याल में कंटूर के आप स्माइल मिलती हैं, आपको नॉड मिलते हैं, एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रिस्पेक्ट कि आप इस कल्चर में काम कर रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी मुझे होती है कि ये नहीं कि कोई टीम का मेंबर हो, और कोई भी हो, लाइक इट्स इवन मैनेजर्स, peers, and like new joiners. I had the privilege of working with Usman for around 3 years. I must say he is my go-to person. The reason for this is that either I have any issue regarding debugging of an issue or finding any root cause of the problem, or maybe it's an issue regarding finding some solution regarding a topic of an R&D. He is always there and he always helped me a lot. Either it's a tester issue or a developer issue or a designer issue, he has solution to everyone's in their respective domains. Usman has a really calm and cool personality which helps others to communicate well with him. Other than that, I really like the leadership skills that he has. He was the one person who was acting as a glue for the whole team and keeping us together. I think the culture जो है ना कंटूर का बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल में मुझे बहुत खुशी होती है कि काम करके ऑफिस आके ज्वाइन करके सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कंट्रोल की लगी वो कुछ इस तरह था कि मैं अपनी किसी लाइफ की क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा था। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पीयर्स ने मेरी हेल्प की, वो अपना मैनेजमेंट, आई थिंक बिलाल, माय मैनेजर्स, माय टीम मेंबर्स ऑल हेल्प मी ऑन इन दैट मोमेंट, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने मेरी उस वक्त हेल्प की और मुझे उस चीज़ से निकाला। मैं उसके लिए बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। I worked with Usman around 5 years in a team where I was leading the QA side and he was leading the development side. We worked in a supportive environment. His leadership skills were very good. His motivation skills with the team was very well. I found him very supportive. Other than technical and leadership skills, as a person, he was a good person. One of the division that I was leading, and during the knowledge share session, they invited Bilal to pitch Contour during that meeting. So one thing that I would like to mention is that we went to Germany. A+W division invited us to join them, and I think that was really like a great thing. हम आमतौर पे बैठ के लोगों से मिल रहे होते हैं, हम कैमरे के पीछे बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप जाते हैं तो पर्सनली लोगों से मिलते हैं। मेरे ख्याल में हम जब वहाँ गए तो सबसे अच्छा है कि हम वो जो 1 to 1 बंदा कनेक्ट करता है वो हमने यहाँ किया, और उसके बाद बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ना कि हम यहाँ से बैठ के जो देखते हैं कि वो एक एप्लीकेशन चल रही हैं, वी वेंट टू द फैक्ट्रीज एंड हमने वहाँ जाके देखा कि असल वो एप्लीकेशन काम कैसे करिए। एंड आई थिंक दैट रियली चेंज माई थाट एट लीस्ट, एंड ऑल्सो माई पीयर्स कि हम वहाँ काम कैसे करें। जब हम वहाँ गए और हम देखा क्या क्रिटिकलिटी है कि एक हमारी फैक्ट्री चल रही है और उसके अंदर हमारे पास सब चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही हैं, तो वहाँ जाके हमें महसूस हुआ कि हमने जो चीज़ें डिलीवर कर रही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर हमें पहले भी अंदाज़ा था कितनी इंपॉर्टेंट, लेकिन वहाँ जाके जब हमने देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक आपके जो प्रोसेस है या वर्क फ्लो है उसको कैसे ख़राब कर सकती है या उसमें क्या चेंजेस ला सकती है, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। एक और चीज़, जब हम वहाँ गए तो वहाँ के जो लोग थे, ख़ासतौर पे जो जर्मनी के लोग थे, उनसे बड़ा मिलके हमें बड़ा पॉजिटिव जेस्चर मिला। ना कि हमने एक प्रोफेशनल अपनी लाइफ को देखा, लेकिन वहाँ साथ साथ पर्सनल लोगों से मिले, रियली हेल्प अस अ लॉट, एंड एंड्री, ऑल ऑफ द पीपल आई थिंक बहुत अच्छे थे, एंड आई रियली लाइक टू थैंक डर्क एंड एंड्री ऑल्सो, एंड एंड्री became like close friend. He was a close friend, but we and also Thomas Heiser. I think I really want to add Thomas Heiser here, that he is such a nice person, and I really learned a lot from him being a mentor, and he really shaped me in my career. And also one thing that I would like to add, like if someone get an opportunity to go abroad, meet the people, I think we should go there and meet them.
not just in sense of going there, but also learning the culture of that country, that people, and then coming back and like giving other people also the opportunity to go and be part of that journey. One thing that I would like to add is that about the Contour is that I already talked about its culture. It's not that you didn't get an opportunity outside, but it's the culture that somehow cast a spell on you. And then it's like you only want to work with Contour. All of the other things, I think people have already talked about the work-life balance, how the good culture is. But I think it's somehow cast the spells on you. It's not like you get not an opportunity outside the Contour, but still you want to work within the Contour. So that's why I said it's Contour Software for Life.